We should deepen our commitment and love to God. We should show through our life that we have something to share with the people. Bishop Simon Stock, CMI. A true CMI sannyasi, an icon of spirituality, a dedicated pastor, a lover of the poor and the tribals, an educationalist and a social worker. Bishop Simon Stock Palathra, CMI. Born in a traditional Catholic family in the Archeparchy of Changanachery, Kerala, he kept up faithfully the spiritual heritage of his family and of the local church, which he perfected in his formation years of the consecrated life in the CMI Congregation. He was a holy bishop, and let his sanctity spread its fragrance even in his passing. The motto of Ma Simon Stock CMI, the second bishop of Jagdalpur, was "For God and His people." As the third child of late Philip and Palathra, Bishop Simon Stock was born on 11th October 1935 and was fondly called Eparchy at home. Real affinity was developed in the mind of young Eplscopal for CMI fathers from the very childhood onwards. Servant of God, Father Canisius was one among them. Besides his uncle, Reverend Palathra was a member of CMI Congregation. He had his schooling in Vadakkekara, especially and St. Ephrem's Mannanam. Having brought up in a very pious and devoted family atmosphere, he had a desire to join the seminary and to become a priest. Initial formation at Mannanam as an aspirant and completing the novitiate with Father Benjamin Kotur as novice master, he made his first profession in the CMI Congregation on 16th May 1958, receiving the name of Great Carmelite Saint Simon Stock. Mission was a long-cherished desire of Bishop Simon Stock. He enrolled his name for the newly entrusted mission of Chanda. However, during that time, Bishop Simon Stock was the secretary of then Prior General, Servant of God, Father Canisius. Bishop Simon Stock himself speaks of the reason of his desire to be a missionary. My desire was to become a priest who is with the poor and for the poor. Therefore, I wanted to become a missionary. On 30th May 1972, he was sent by Monsignor Paulinus, newly appointed Exarch of Jagdalpur, to the new mission to study the possibilities, and later in July the other members of the pioneering team of missionaries joined him. Father Simon Stock served as the Pro-Exarch, Director of Social Work Department and Cathedral Parish Priest. He initiated a lot of social service programs like Food for Work, Mother and Child, etc., and established contact with more than 25 villages around Jagdalpur. Starting of the mission at Karidgaon was an expression of his desire. It was at the request of the chief of the village that Father Simon Stock decided to start the mission there in a rural hut of villages which is 16 kilometers away from Jagdalpur. CMI Congregation came to his support for the village mission. He initiated social work program and a small dispensary there with the help of sisters. One of the early missions was started at Mariguda in 1978 by Father Simon Stock at the request of the people. A school, hostel for boys and girls, school, social work programs and dispensary were begun. The school and other buildings of the fathers and sisters were later demolished by anti-social elements, but with the support of the people, the missionaries remained back in the village, continued their work, and today it is one of the best Hindi medium schools of the area. कि वे स्वर्गीय बिशप साइमन स्टॉक अनुभव और प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे।
और स्वभाव से ही बहुत ही सरल, सज्जन और विनम्र व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन एक धर्म समाजी पुरोहित और फिर धर्माध्यक्ष के रूप में बहुत ही प्रेरणादायी और आदर्शमय रहा है। वे एक कर्मठ मिशनरी के रूप में पारदर्शी जीवन जी करके सुसमाचार की घोषणा अपने जीवन के अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक करते रहे। बस्तर की जनता की सेवा उन्होंने अपने समर्पित जीवन के द्वारा किया है और मैं मानता हूँ कि बस्तर को वो नहीं छोड़ेंगे। अब हम उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं जो प्रभु के पास कि हमारे इस क्षेत्र के लिए वो ईश्वर से निवेदन करें। In 1990, after the unexpected demise of Bishop Paulinus, Father Changanachery was elected as the administrator of the diocese and Father Simon Stokes was appointed the procurator of the diocese. Knowing that it was the will of God, Father Simon Stokes accepted his appointment in January 1993 as the second bishop of the Diocese of Jagdalpur, and his Episcopal ordination was on 19 March 1993. Considering his new role as a shepherd seriously, he gave utmost priority for the growth and development of the diocese. We have lost a true shepherd and a committed CMI religious missionary who was successful to inspire people by the example of his own life. But we have gained today an intercessor, an advocate for us at the throne of grace. During his term as the successor of Bishop Paulinus, the first missionary bishop of Jagdalpur, he initiated enormous developmental programs with more expansion to interior places and different institutions in the diocese for the welfare of the people. Bishop Simon Stokes, a perfect and exemplary religious with the minimum words, retained always calm and serene nature, even when he was suffering from the old age diseases, without showing any displeasure or unhappiness. His life was permeated by the Eucharistic presence, and thus he radiated a graceful aura wherever he lived. He insisted that the young missionaries should learn the language and culture of the people and wanted that the church be identified with the life of the people in culture and in its expressions. One thing I noticed, apart from this simple, humble person available, as a shepherd, he was available to the priests and sisters and the people. In the words of Pope Francis, he could realize the smell of the sheep. He was with the people. बिशप साइमन स्टोक बस्तर संभाग में एक उच्च सम्मानीय व्यक्ति तथा जाने माने मिशनरी थे, इसलिए उन्हें सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें दलिया फादर के नाम से जानते हैं। ईसाइयों एवं और अन्य धर्मावलंबियों के बीच वे बहुत ही श्रद्धेय और प्रिय थे। आध्यात्मिक जीवन, समय पालन, सरलता, सादगीपूर्ण जीवन, समर्पित प्रार्थना एवं विनम्रता उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। उनका धर्माध्यक्षीय कार्यकाल शांतिपूर्ण तथा समृद्ध रहा है। उनके सुशील स्वभाव के कारण वे लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे। बस्तर के लोगों की सेवा हेतु संस्थाएं प्रारंभ करने एवं साहसिक उपक्रम प्रारंभ करने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी सहकर्मियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। बिशप साइमन स्टोक एक ऐसे मिशनरी थे
जिन्हें धर्म प्रांतीय प्रशासन की भी संपूर्ण जानकारियां थी। वे अपने शब्दों और कर्मों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे। जब धर्माध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी, तब सभी मिशनरियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया था। मिशनरी कार्यों में नए और साहसिक कदम उठाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया। वर्ष 1993 में उनके पदभार संभालते ही जगदलपुर धर्म प्रांत ने महत्वपूर्ण विकास किया। कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण पर अपनी आस्था जताई। प्रशासकीय सुधार की ओर पहला कदम उठाते हुए उन्होंने पूरे धर्म प्रांत को नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल डीनरी में विभाजित किया। बिशप साइमन स्टोक जी के ही नेतृत्व में जगदलपुर पास्टरल एपार्कियल काउंसिल JEPC का गठन हुआ। बिशप साइमन स्टोक ने प्रथम डायोसीजन माइनर सेमिनारी की स्थापना सन 1998 में वियानी भवन परपा में की। उसके पश्चात सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर ब्रदर्स के लिए कोंडागांव में गुरुकुल माइनर सेमिनारी की स्थापना वर्ष 2000 में की। उनके कार्यकाल में धर्म प्रांतीय पुरोहितों की संख्या 4 से बढ़कर 28 हो गई। उन्हीं के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वर्तमान में धर्म प्रांतीय पुरोहितों की संख्या 50 है। उन्होंने सभी धर्म समाजों को स्थानीय कलीसिया से बुलाहट लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उन्हें धर्म प्रांत में ही प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने की सलाह दी। उनके इस सलाह की वजह से आज धर्म प्रांत में विभिन्न धर्म समाजों के लगभग 20 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। काफ़ी लंबे समय से धर्म प्रांत में एक अस्पताल की कमी महसूस की जा रही थी। यह कमी उस वक्त चुभने लगी जब हमारे प्रथम धर्माध्यक्ष बिशप पॉलिनस जीरकत जी का निधन हुआ था। हमारे पास एक उचित स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं थी। ऐसे समय में एकमात्र प्रेरक के रूप में बिशप साइमन स्टोक सामने आए और उनके अथक प्रयासों से 18 अक्टूबर 1997 को MPM हॉस्पिटल की स्थापना की गई। गुड शेपर्ड पास्टरल सेंटर की स्थापना वर्ष 2009 में बिशप साइमन स्टोक के कार्यकाल में ही संपन्न हुई। विभिन्न प्रेरिताई कार्यों एवं प्रशिक्षण हेतु ऐसे केंद्र की हमें बहुत ही आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में बिशप साइमन स्टोक द्वारा किए गए कार्य एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनके धर्माध्यक्ष बनने के पूर्व धर्म प्रांत में केवल 5 स्कूल जगदलपुर, कांकेर, किरंदुल, बचेली और मारीगुड़ा में संचालित थे। धर्म प्रांत ने गंगालोर, पालनार, बांदे, नारायणपुर, बोरगांव, केशकाल, सुकमा, कोंटा, बीजापुर, छोटे बेटिया और कुटनी जैसे जगहों पर स्कूलों की स्थापना की। अन्य धर्म समाजों को भी बिशप साइमन स्टोक ने शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 2012 तक धर्म प्रांतीय और धर्म संघीय स्कूलों की कुल संख्या 34 तक पहुंच गई। यह सब बिशप साइमन स्टोक के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। बिशप साइमन स्टोक जी प्रथम धर्माध्यक्ष मार पॉलिनस जीरकत के काफी करीबी थे। प्रथम धर्माध्यक्ष द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को बिशप साइमन स्टोक ने आगे बढ़ाया। जगदलपुर धर्म प्रांत के कार्य क्षेत्र का विस्तार अंदरूनी इलाकों में किया। सभी समर्पित पुरोहितों एवं धर्म बहनों की सहायता से बिशप साइमन स्टोक ने बहुत से नए गतिविधियों को इन जगहों पर प्रारंभ किया। बिशप साइमन स्टोक जी की एक ओपन डोर पॉलिसी थी, इसलिए उन्होंने बस्तर में अपनी सेवाएं देने के लिए नए और अनेक धर्म समाजों को आमंत्रित किया। सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में नित्य आराधना की शुरुआत भी उन्होंने ही किया था। We are all impressed by his virtues, the holiness of Mar Simon Stoke, CMI. Let us thank God for such a holy man. Imitating Christ, who was united with his Father in prayer, Bishop Simon Stock wanted to spend his life after retirement at a prayer center called Mardum. But his provincial requested him to be in the novitiate. Accepting his request, he joined as a member of Vinayalaya Novitiate, Bhanpuri. He lived as a perfect religious, being obedient to the religious superiors for everything.
उनका स्वभाव वैसा ही था, कम शब्दों द्वारा लेकिन अपने उदाहरण द्वारा वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। During the last years of his ill health, he came to the provincial house and spent his days there. On 19th November 2022, he was called for his eternal reward and was buried at St. Joseph Cathedral, Jagdalpur on 22nd November 2022. We should deepen our commitment and love to God. We should show through our life that we have something to share with the people. Bishop Simon Stock, CMI. Though he was a saint when he was living in this world, I am 100% sure that PALATHRA family and Jagdalpur mission will be blessed officially with a saint in Mar Simon Stock in the near future.